learners, welcome to Educational Channel. Today we discuss Universalization Elementary Education Part 2. So please join this class. Please everyone join this class. Today we discuss Universalization Elementary Education Part 2. Let's start. In first part, we studied what is universal elementary education and what is the aim of universal education, right? Today, we discuss which steps are needed to fulfill this goal. So, to fulfill this goal, we need some steps. These are: the first one is Sarva Shiksha Abhijan, launched in 2001. It is one of India's major flagship programs for universalization of elementary education. Its overall goals include universal access and retention, bridge of gender and social category gaps in elementary education, and achieving significant enhancement in learning level of children. That means SSA Sarva Shiksha Abhijan is a program for universal elementary education. This program is also an attempt to provide an opportunity for improving human capability to all children through provision of community owned quality education in a mission mode. Universal elementary education in a time bound manner as mandated by 86th Amendment to Constitution of India, making free and compulsory education to the children of 6 to 14 years. And here mentioned that education is a fundamental right of all children. Okay. Through these schemes, we fulfill the universal elementary education. Next. Next steps is National Program for Education of Girls at Elementary Level. NPEGEL is implemented in educationally backward blocks. NPEGEL means National Program for Education of Girls and Elementary Level. It is the short form of it. It is implemented in educationally backward blocks and address the needs of girls who are in as well as out of the school. NPEGEL also reaches out to girls who are enrolled in school but do not attend school regularly. NPEGEL emphasizes the responsibility of the teachers to recognize vulnerable girls and pay special attention to bring them out of their state of vulnerability and prevent them from dropping out. That means the National Program of Education of Girls at Elementary Level is focused intervention of Government of India to reach the hardest to reach girls, especially those not in school.
It is launched in 2003. Okay, it is a very important question. It is launched in 2003. It is an important component of SSA, matlab Sarv Shiksha Abhijan, which provides additional support for enhancing girls' education over and above investment for girls' education through normal SSA intervention. Here are some objectives of this program. These are a reduction of gender gap in education sector. Second one is ensure the greater participation of women and girls in the field of education. Okay. Third is improve the quality of education. The teacher always focus on this. Next and last, stress upon the relevance and quality of girls' education for their empowerment. Okay. Here also focus on those girls who enroll in the school but do not attend school, and also those girls who are dropping out. Teacher always focus these girls and recognize the vulnerability. Clear? Next, midday meal scheme. This scheme is very important and very well known scheme in keeping with the constitutional provision to raise the level of nutrition of children and enable them to develop in a healthy manner. The National Program of Nutritional Support to Primary Education. It was launched as a centrally sponsored scheme in 1995, commonly referred to as a MDMS, that means midday meal scheme. This was expected to enhance enrollment, retention, attendance of children in school apart from improving their nutritional levels. That means this midday meal scheme is a school meal program of the government of India. Okay, it is designed to, why it is designed, why the scheme is launched, because it is designed to better the nutritional standing of the school age children. The government recognized that this is the benefit for those students, those children who are very poor and very hungry. This scheme satisfies the hunger of many children. And also, second is the supplies nutritious foods. It is a very essential thing for every child to get a very healthy. So supplies nutritional foods to poor children, which helps them to concentrate on their study better. And also next one is students come to government school daily and would not be asked to do labor work. So for attendance, for retention, this scheme is very important. I hope the 3 point is clear. Move on the fourth point. Bridge school. What is bridge school, right? The students who leave their studies and did not come to school for good studies to some extent, and main subject of this program, students are given a chance to complete their education which was left. That means who leave the school before complete their elementary education and obviously they forget their studies. Those students are given a chance, an opportunity to complete their education through bridge school. Okay. Next, fifth point. The appropriate curriculum. If we want to a quality education, if we want to the universalization of elementary education, then we focus the appropriate and the sufficient curriculum of elementary education. The primary curriculum is designed to nurture the child in all dimensions of his or her life
and also it is follows the real life situation. It emphasizes on the need of developing learning skills, particularly on reading and writing through inductive process of learning. That means when curriculumist and teacher develop, curriculumist means who develop the curriculum, okay? The curriculum always developed by curriculumist and also teacher, okay? So when curriculumist and teacher develop the curriculum, they should focus the need, interest and capability of the child or of the students. Basis on these aspects, the curriculum should be developed and also flexible according to society and student. The curriculum should be structured in such a way as to enhance the skills of students. We always focus the curriculum should be structured in such a way as to enhance learning skills, increase the mastery of the students. Okay. Next, sixth point. Very important point and very essential element of all levels of education. This is use scientific teaching methods, not only elementary education, not only secondary education. It is applicable all level of education. When a teacher teaches, he or she always use an effective teaching methodology where all students listen and understood the content with interest and attentively. That means when teachers teach in the class, they always use scientific and modern techniques. Which are the scientific and modern techniques? These are slide share, chart, model, problem solving work, group work, etc. etc. Because in this method, students are active and they understood the concept very attentively and attractively. They never forget this concept because they listen this concept attentively. Okay. Next, free and compulsory education. In elementary education, students are given free education. Free education means no fees, free books, free transport, etc. And also, school facilities should be provided to all children between the age group of 6 to 14 years old. Okay, 6 to 14 years old in the country. The school be easily accessible within the walking distance of a child. That means this is the very important step for this program. Why we discussed in the first part that the free education and the compulsory education means no fees, free book and stationery, free midday meals and free transport. Universal elementary education does not focus particular classes or religious or gender to provide education. Here, provide the opportunity, but what? To access, enroll, retention and also qualitative education up to the age of 14. This is the most critical sector which contribute not only to the national development but also the social program of the country. It is truly increasingly educated society will achieve the goal of nation, and that is very clear, it will achieve universal literacy. Okay. Next is pre-matric scholarship scheme. It is very new schemes for all children. Pre-matric scholarship scheme. What is the pre-matric scholarship scheme? Hello Azaruddin. Pre-matric scholarship is the scholarship for students from minorities communities. So this scholarship is applicable for only minorities community. Okay. The scholarship at pre-matric level will encourage parents from minorities community
to send their schools going children to school, lighten their financial burden on school education, and sustain their effort to support their children and to complete school education. That means pre-matric scholarship is a broad category of school scholarship that offer financial assistance to students studying at the pre-matricular level of education. The scholarship at pre-matric level will encourage parents from minority communities. Minority communities mean those students who belonging to Muslim, Christian, Sikhs, Buddhist, Jain, Parsis category can apply for this scholarship. Okay. So this scholarship always encourage parents from minority communities to send their school going children to school, lighten their financial burden on school education, and sustain their effort to support their children to complete school education. So this scholarship also retain the students and also helps the students to complete their elementary education. Love you, Azaruddin. Please listen. The concept of universalization elementary education. Pre-matric scholarship scheme. What is pre-matric scholarship scheme? Pre-matric scholarship is a broad category of the minorities group because here the government focus only the minorities group to retain the schools because we always see that some students always drop out या will leave on the schools. तो स्टूडेंट को रिटेन करने के लिए एंड जो माइनॉरिटी से बिलोंग करती है वो रेगुलर स्कूल्स पे आए उसको देखने के लिए ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया गया है ठीक है ओके प्लीज कंफर्म मी कि जो मैंने अभी पढ़ाया है फर्स्ट टू 8 पॉइंट तक सब कुछ क्लियर है या नहीं concept is clear or not please tell me okay we move on next topic problems of universalization elementary education. The first problem here we discuss what is the problem to achieve this goal. Okay, clear hai concept. Very good. The next topic is what is the problem. The first problem is social problem. Social problem is a big problem to achieve this goal. Okay, we discuss on it. Wait a minute, student. Just wait a minute.
Let's start. The first is social problem, and social problem की first sub point है apathy of parents. What is the apathy of parents? That means it is a known fact that investment in education is far better than investment in machine, right? Because it helps the economy and the individual household to be more productive. Due to cultural deprivation, poverty, and illiteracy of parents, they are unable to realize this value and are indifferent to their child education. They do not motivate the child to go the schools to gain the knowledge. They always think that it is a very luxury things. It is very this is not unable to realize this value of education and indifferent to their children's education. That's why a big problem to achieve universalization elementary education. Okay, next. Next, conservation attitude towards cooperation. What is the means? Conservation attitudes towards cooperation. That means lack of public cooperation. In the name of public cooperation, most institutions resort to public exploitation. They open schools generally in those areas where they expect good return or benefit. Institution, organization, free education are few in number. That means we can say that there is no accessible all over the India, there is no accessible all over the state. The authority always focus on the benefit. The authority focus those area where they expect good return or benefit. Institution, organization, free education in the means of a few in a number. Okay. Next, overpopulation. Overpopulation means with increasing population, the sufficient number of schools do not increase. For this reason, classroom is overcrowded, right? That means we can say that in an overcrowded classroom, the teacher do not focus all children in an effective way. The teacher do not recognize the students' needs. The teacher cannot teach properly because the teacher do not identify the needs, the interests, the capability of the students. So in this way, we see that the overcrowded classroom is a very quantitative based but not a quality based education. Okay, next. Next is early marriage. Early marriage is a big problem. Why early marriage is a big problem? This happens only girls. Okay, why early marriage is a big problem? Let's discuss on it. In some state or caste, there is a practice of early marriage. In the case of girls, early marriage is a significant cause of wastage is more pronounced at the middle stage of education. It is common experience that girls in village are generally withdrawn from school, especially after a marriage. That's why we say the early marriage is a big barrier to complete the goal of universalization elementary education. Clear? The social problem is clear, student? Please tell me.
Next. Next is economic problems. The first economic problem is poverty of parents. Poverty of parents means the parents are below in a low poverty level. There is a big problem to fulfill the national goal. What is our national goal? The national goal is universalization elementary education. Why the poverty impacts our education? Let's discuss. Economic backwards of the family has been found to be one of the most important causes contributing to conditions of wastage and stagnation. This specific cause could be explained in two ways. The first one, education costs directly something to the parents in the form of fee, book, stationery, school uniform, etc. And the second one is that the child in the family earns to support the family income by working somewhere. This employment deprives the child from going to school. So we see that the poverty is a big barrier to achieve this goal, right? Next. Next is poor nutrition of the child. It also a big obstacle. Why it is a big obstacle? Let's discuss. If children with insufficient diets are reported to have more problem with health, academic learning, and psychological behavior. Malnutrition can result in long-term neural issue in the brain, which can impact a child's emotional responses, reaction to stress, learning disability, and other medical complications. That's why when the children is hungry and do not listening carefully their content, their subject oriented, okay, that's why the poor nutrition of the children is a very poor condition with their mental health with their physical health. That's why those children's performance is very poor in the academic level. Clear? Next next is educational problem. In the educational problem, the first point is low enrollment of SC, ST, and OBC. Good evening, Chandan. Low enrollment of SC, ST, and OBC is also an obstacle towards universal elementary education. SC, ST, and OBC students are coming from poor family. Okay, they have not sufficient money to continue their education. Therefore, maximum SC, ST, and OBC students leave their education to complete their elementary education. Right? Next, defective curriculum. What is the mean of defective curriculum? If the curriculum is narrow, bookish, and theoretical based, so it cannot meet student need. The learning environment is boring, students cannot listen the content attentively, and they become play a passive role. If the teacher uses traditional methods, next point is uninspiring teaching methods. That means if the teacher use traditional method or some chalkboard methods, then students have no interest to their learning, no effective on this. Next, lack of competent teacher. That is also the same. If the teacher's quality is very low, teacher is not a mastery on their subjects, teacher have a no quality education, so the teacher could not teach in a proper way, in a scientific way to their students. Next is graphical problem.
Wait a minute. Next is graphical problem. What is the graphical problem to barriers towards universal elementary education? It is a very common problem for all level of education. Okay, so let's discuss about it. We see that some areas, some hilly areas are inaccessible to provide the education because they are scattered population. That's why a graphical problem is a big problem to fulfill the universal elementary education. Okay. Next. Next is administrative problem. Administrative problems, inequity in educational opportunity, right? Lack of women teachers, lack of supervision, failure to effort compulsory education, these are also a biggest problem, because if inequality attitude still present in the society and women or their family are not awarded their education, so the national aim could not be fulfilled, right? Next is, and last is, a lack of teaching aids. The teaching aids is a most essential component of our education, right? The National Educational Surveys have time and again highlighted the weak infrastructure in schools. The village school is found incompleted in terms of schools building and basic educational input. Example for blackboard, chalks, charts, maps, and other teaching aids, cupboard, furniture, sitting space, drinking water. Do not find a school going as a joyful activity if these aids are absent. All these constitution a poor school environment. Frequent transfer of teachers or non placement of teachers for a long duration deprive the children of instruction. The child has no other alternative but to discontinue education. So we say that administrative problems are also our biggest obstacles and barriers to achieve universal elementary education. Let's discuss the overall concept. Now I understood the concept Hindi and English both. Okay. The first point is, which steps are needed for universal elementary education. तो जो universal elementary education है उसको हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 1 पर. वहां पर हम लोग ये स्टडी किए थे कि व्हाट इज यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन एंड व्हाट इज द एम्स ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, राइट? तो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, उसका एम क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज हम लोग पार्ट 1 पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब ये जो पार्ट 2 है, यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि which steps are needed to fulfill this goal. तो ये जो कौन सी स्टेप्स है जो इस नेशनल गोल्स को या फिर हमारी जो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको फुलफिल करने के लिए मदद करेगा. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च इन 2001. तो सर्व शिक्षा अभियान कब लॉन्च हुआ था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2001 पर हुआ था. ओके, तो एसएससी इज अ प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन. तो एसएससी इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है. यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एक प्रोग्राम है. This program is also an attempt to provide an opportunity for improving human capability to all children. मतलब ये जो एसएसए है ये सभी को एक अपॉर्चुनिटी देती रहती है खुद की कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए. किस किस को अपॉर्चुनिटी देती है? 6 to 14 ईयर्स के जो सभी बच्चे हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन पर पढ़ सके. इसका मतलब है यहाँ पर फ्री एनरोलमेंट होगा, ठीक है, और ये कंपलसरी एजुकेशन होगा हर 6 से 14 साल के बच्चे के लिए. ऐसे से इस प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो डिनोट करेगा
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को, जिसके थ्रू हर एक बच्चा एजुकेशन को फ्रीली एक्सेस कर सके। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था कि NPEGEL, दैट मीन्स नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल है, ये 2003 पर लॉन्च हुआ था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था, किसके लिए इम्प्लीमेंट हुआ था? ये गर्ल्स के लिए इम्प्लीमेंट हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोकस किया जाता है उस गर्ल्स को जो कि स्कूल्स पर एनरोल तो किया है मगर अटेंड नहीं होती, रेगुलर अटेंडेंस नहीं देती है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फोकस किया जाता है। और उसके अलावा जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स है, उन ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर फोकस किया जाता है। ओके, अच्छा, यहाँ पर और कुछ चीज के ऊपर फोकस किया गया। ये एसएसए का ही एक पार्ट होती है। यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स के ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पर जो जेंडर गैप होती है, ठीक है, उसको रिडक्शन करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है रिडक्शन ऑफ जेंडर गैप इन एजुकेशन सेक्टर। नेक्स्ट है इंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन एंड गर्ल्स इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब हर एक वोमेन, हर एक महिला इसको एक्सेस कर सके, एजुकेशन को पार्टिसिपेट कर सके एजुकेशन पर, इसके लिए यहाँ पर फोकस किया गया है। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर बोला जाता है, तो इट इज एम्फसाइज द क्वालिटी एजुकेशन, स्ट्रेस अपॉन द रिलीवेंस एंड क्वालिटी ऑफ गर्ल्स एजुकेशन फॉर देयर एम्पावरमेंट। जो एम्पावरमेंट होती है उसको इंक्रीज करना, उसको डेवलप करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, midday meal, very well known schemes for every children, in keeping with the constitutional provision to raise the level of nutrition of children and enable them to develop in a healthy manner। तो ये जो मिड डे मील है, मिड डे मील स्कीम क्या है? एक ऐसा स्कीम है जो कि स्कूल मील प्रोग्राम को, मतलब स्कूल पर खाना प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड गवर्नमेंट से होती है, किसके लिए? न्यूट्रिशनल को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इट इज डिजाइन टू बेटर द न्यूट्रिशनल स्टैंडिंग ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रेन। इसका बेनिफिट क्या होगा? सेटिस्फाइड द हंगर ऑफ मेनी चिल्ड्रेन। देखना, बहुत सारी पॉवर्टी लेवल से जो स्टूडेंट्स आती है वो बहुत ही ज्यादा भूखा रहती है, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता सही तरीके से। अब भूखे पेट कैसे पढ़ाई करेगा? तो उनकी जो हंग्री है उसको सेटिस्फाई भी होती है, वो उसको खाना भी मिलती है। सप्लाइज न्यूट्रिशन फूड टू पुअर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर जो सप्लाई किया जाता है पुअर चिल्ड्रेन को, क्या सप्लाई किया जाता है? न्यूट्रिशन फूड्स, जो हेल्प करती है, विच हेल्प देम टू कंसेंट्रेट ऑन स्टडीज बेटर। जो मैंने कहा था कि भूखे पेट पढ़ाई नहीं होती है, जब खाना मिलेगा, जब फूड मिलेगा, तब कंसेंट्रेट भी अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? स्टूडेंट्स कम टू गवर्नमेंट स्कूल्स डेली एंड नॉट बी आस्क्ड टू डू लेबर वर्क। तो वो लोग लेबर वर्क क्यों करते थे? क्योंकि खाना सही तरीके से नहीं मिलती थी। खाना खाने के लिए, खाना पाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, और वो पैसे कुछ लेबर वर्क से उन लोगों को मिल जाती थी। तो अब जब खाना मिल रहा है तो लेबर वर्क करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स इस मिड डे मील के थ्रू रोज आएगा स्कूल्स पर, स्कूल की अटेंडेंस उनका सही रहेगा, कुछ नॉलेज भी मिलेगा, लेबर वर्क भी नहीं होगा। नेक्स्ट, ब्रीफ स्कूल्स क्या है? दैट मीन्स हु लीव द स्कूल बिफोर कंप्लीट देयर एजुकेशन। जो लोग स्कूल्स को, मतलब स्कूल में जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, उनकी जो पढ़ाई होती है क्लास 8 तक, वो कंप्लीट होने से पहले ही छोड़ देती है, मतलब ड्रॉप आउट हो जाती है वो स्टूडेंट्स। एम आई राइट? तो इसके लिए वो उनकी जो पढ़ाई है वो भी भूल जाती है, फॉरगेट देयर स्टडीज। दो स्टूडेंट्स, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक चांस प्रोवाइड किया जाता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है। विच अपॉर्चुनिटी? टू कंप्लीट देयर एलिमेंटरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्या है? एप्रोप्रिएट करिकुलम। अब एप्रोप्रिएट करिकुलम क्या है? आप सोचो, मैं आप लोगों को अगर
सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज प्रोवाइड करूंगी या फिर सिर्फ चॉक बोर्ड मेथड से पढ़ाई कराऊंगी, कोई भी पिक्चर्स नहीं, कोई भी डायग्राम नहीं, तो बोर फील होगा, राइट। तो अगर पिक्चर से, एग्जाम्पल से, स्लाइड शेयर मेथड से पढ़ाऊंगी तो आप लोग अटेंटिवली सुनोगे। सिर्फ ये नहीं, ये तो साइंटिफिक मेथड्स हो गया, तो उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स की नीड है, क्योंकि करिकुलम कैसा होना चाहिए, विच टाइप ऑफ करिकुलम इज नीडेड फॉर द स्टूडेंट्स। द करिकुलम ऐसा होना चाहिए जहां पर स्टूडेंट्स की नीड हो, जहां पर स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट हो, जहां पर स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी द करिकुलम शुड बी स्ट्रक्चर्ड। तो उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स की जो करिकुलम है, करिकुलम को गठित करना चाहिए। तो करिकुलम को फॉर्मुलेट करने के लिए क्या क्या करना होगा, स्टूडेंट्स की नीड को पता करना होगा, राइट। स्टूडेंट्स की जो कैपेबिलिटी है उसको देखना होगा। सिर्फ कैपेबिलिटी एंड नीड से काम नहीं चलेगा, उनकी इंटरेस्ट को देखना होगा। उसके अलावा हमें देखना होगा सोसाइटी का क्या नीड है। तो वी से दैट व्हेन curriculumist and teacher develop the curriculum, they should focus the need, interest and capability of the student. Basis on these aspects, the curriculum should be developed and also flexible according to the society and student needs. The curriculum should be structured in such a way as to enhance the skills of students and improve their mastery on the subject. ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट में जब मास्टरी गेन करोगे तो वो मतलब मास्टरी गेन हो सके, आपकी लर्निंग स्किल्स एनहेंस हो सके, ये सभी चीज तभी मुमकिन होगा, तभी पॉसिबल होगा जब करिकुलम अच्छा होगा। अब टीचिंग मेथड तो मैंने बता ही दी। When the teachers in the classes they always use scientific and modern technique. जब भी टीचर कोई क्लासेस में पढ़ाई कराएगा तो साइंटिफिक एंड मॉडर्न टेक्निक के थ्रू कराएगा, जैसे कि स्लाइड शेयर मेथड्स हो गया, आपकी चार्ट मॉडल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, लेबोरेटरी वर्क, ये सारी चीजों के थ्रू इन द प्रैक्टिकल वे जितना सारी काम होगा वो सारी चीज के थ्रू पढ़ाई कराएगा। तब स्टूडेंट की जो भी इंटरेस्ट होती है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज होगा। तो बिकॉज इन दिस मेथड स्टूडेंट्स आर एक्टिव एंड दे अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेरी अटेंटिवली एंड अट्रैक्टिव आल्सो। द स्टूडेंट्स व्हेन द स्टूडेंट्स लिसन द कंसेप्ट वेरी अटेंटिवली, so we can say that the students never forget this concept because he or she listen the concept very attractively and attentively. So always teacher should make our teaching method in a scientific way and also a attractive way. Pre and compulsory education. So this is the very important step for this program. Pre and compulsory education universalization के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए जब universalization elementary education पर बोला ही गया है कि free education provide करो। What is the free education? Free education means free books, नो फीस, फ्री बुक, स्टेशनरी फीस हो फ्री होगा, फ्री मिड डे मील होगा, फ्री ट्रांसपोर्ट होगा, सब कुछ फ्री होगा। जो टीचिंग लर्निंग जो एड्स होती है, जो यूनिफॉर्म्स होती है, वो भी फ्री होगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट्स था, व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो देखिए ये क्लास 1 से क्लास 10 तक दिया जाता है। तो अब क्लास 1 से दिया जा रहा है तो ये एलिमेंटरी एजुकेशन पर भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक स्टूडेंट्स, जो भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स होती है, जैसे कि मुस्लिम कास्ट से हो गया या फिर जैनिज्म, सिखिज्म, पारसीज, इन सारी कास्ट से अगर कोई स्टूडेंट्स बिलोंग करेगा तो उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, तो इस स्कॉलरशिप से बेनिफिट क्या मिलेगा? इस स्कॉलरशिप बेनिफिट ये मिलेगा कि जो पेरेंट्स है वो मोटिवेट होगा स्टूडेंट्स को स्कूल भेजने के लिए। तो स्कूल जब आएगा स्कॉलरशिप मिलेगा, स्कूल जब आएगा तो उनको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो रेगुलरिटी होगा, रिटेन होगा स्टूडेंट्स। अच्छा, अब प्रॉब्लम्स को भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। पहले मैं इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ, फिर मैं इंग्लिश एंड हिंदी बोथ समझाती हूँ। ठीक है, सैटरडे की क्लासेस पर हम लोग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को मिक्स कर समझेंगे।
ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होती है? एम्पैथी, एपैथी ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स को मोटिवेट नहीं मिलती। क्यों पेरेंट्स को मोटिवेट नहीं मिलती? क्योंकि पेरेंट्स सोचता है कि एजुकेशन एक बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ होती है, ठीक है? जो स्टूडेंट्स या जो पीपल बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, उनके लिए एजुकेशन सही है। हम लोग गरीब हैं, हम लोगों को खाना चाहिए बस, और क्या, एजुकेशन मिलने से क्या होगा? तो दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन का क्या वैल्यू होती है वो तो उन लोगों को समझ में नहीं आती है, इसीलिए स्टूडेंट्स को नहीं भेजती है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं करती है। एक देखना, एक मैक्सिमम लोगों की मेंटेलिटी होती है कि एजुकेशन पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करें? ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ और चीज़ों पर करेंगे, ठीक है, बेनिफिट मिलेगा, मगर एजुकेशन पर इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। मगर अगर एजुकेशन पर इन्वेस्ट हम लोग करेंगे तो सही सीखेंगे, और उस सीखी हुई नॉलेज से ही हम लोग कुछ सर्विसेज एंड प्रोडक्टिविटी को मैन्युफैक्चर या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। That's why it say that it is a known fact the investment in education is far better than investment in machines, because it helps the economy and the individual household to be more productive and prosperous. Due to cultural deprivation, poverty, and illiteracy of parents, they are unable to realize the value and are indifferent to their child's education. Okay. ओके, नेक्स्ट कोऑपरेशन। कोऑपरेशन पर क्या होती है? बहुत सारी स्कूल्स होती है कि सभी जगह मैं स्कूल्स को बिल्ड नहीं करूंगी, जहां पर सबसे ज्यादा लोकेलिटी होगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, वहां पर ही मैं स्कूल्स बिल्ड करूंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाती है कि अगर कुछ जगह ऐसी है कि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, और कुछ जगह ऐसी है कि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, इसके थ्रू जो वॉकिंग डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सभी स्टूडेंट्स को स्कूल पर एक्सेस होना या स्कूल पर एडमिशन लेने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सिर्फ बेनिफिट देखकर स्कूल्स को बिल्ड करना नहीं है, स्कूल को हर एक जगह, हर एक एरिया पर बिल्ड होना होगा। नेक्स्ट है ओवर पॉपुलेशन। अगर ओवर पॉपुलेशन हो गया तो टीचर ठीक तरीके से स्टूडेंट्स की नीड को नहीं देख सकेंगे, स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट, स्टूडेंट की क्या इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर फोकस नहीं कर सकेंगे, तो प्रॉपर वे में टीचिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, अर्ली मैरिज वुमेन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जल्दी जल्दी शादी कर दो लड़की का, तो क्या होगा कि जब शादी हो जाती है तो एजुकेशन कंटिन्यू नहीं होती है, बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो एजुकेशन से डिप्राइव्ड हो जाती है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इन सम स्टेट्स और कास्ट देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ अर्ली मैरिज। इन द केस ऑफ गर्ल्स, अर्ली मैरिज is a significant cause of wastage is more pronounced at the middle stage of education. It is common experience that girls in village are generally withdrawn from school, especially after a marriage. Okay, next. नेक्स्ट इकोनॉमी। स्टूडेंट पेरेंट्स के पॉवर्टी लेवल अगर होगा तो जाहिर सी बात है उनकी जो भी फीस है, उनकी जो भी ड्रेसेस, स्कूल ड्रेस है या टीचिंग एड है, वो खरीदने में जो पैसे लगती है वो उनको नहीं होती है, तो इसीलिए एक प्रॉब्लम आ जाती है। न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन, अगर न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलेगा तो हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम आ जाती है, जो मैंने कहा अभी कुछ ही देर पहले कि अगर स्टूडेंट्स को सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, चिल्ड्रन विद इनसफिशिएंट डाइट्स रिपोर्टेड हैव अ मोर प्रॉब्लम्स विद हेल्थ, एकेडमिक लर्निंग एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर। malnutrition can result in long term neural issues in the brain, which can impact a child's emotional responses, reaction to stress, learning disabilities and other medical complications. Okay, नेक्स्ट एजुकेशनल प्रॉब्लम, ये भी मैंने बताया एस सी एस टी ओ बी सी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वो लोग पुअर बैकग्राउंड से या पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, तो एस सी एस टी एंड ओ बी सी स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली, दे हैव नॉट अ सफिशिएंट मनी टू कंटिन्यू देयर चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई दे आर ड्रॉप आउट। नेक्स्ट क्या है? अनइंस्पायरिंग टीचिंग मेथड्स। अगर टीचिंग मेथड साइंटिफिक नहीं होगा तो स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, स्टूडेंट्स बोर फील करेगा, स्टूडेंट्स की पैसिव रोल बिहेवियर में दिखाई देगा। ओके,
नेक्स्ट ग्राफिकल प्रॉब्लम्स, अगर इनएक्सेसिबल एरिया होगा, ठीक है, हिली एरिया होगा, तो यहाँ पर रेगुलर क्लासेस करना प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, अगर इक्वालिटी नहीं होगा, ठीक है, अगर सोसाइटी में यही चलता रहा कि इनइक्वालिटी एटीट्यूड स्टिल प्रेजेंट इन द सोसाइटी and also women or their family are not awarded their education, so the national aim, that means the universal elementary education, could not be fulfilled. And the last is the lack of suitable teaching aids. अगर टीचिंग एड सुइटेबल ना हो तो क्या होगा, तो टीचिंग इट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ज़्यादातर देखा जाता है कि द विलेज स्कूल्स इज फाउंड इनकम्प्लीट इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स बिल्डिंग, उनकी स्कूल्स बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती है, एंड द बेसिक एजुकेशनल जो इक्विपमेंट होती है, इनपुट होती है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चॉक, चार्ट्स, मैप्स, अदर टीचिंग एड्स, कपबोर्ड, फर्नीचर, सिटिंग स्पेस, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एटसेट्रा, ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। In the absence of this physical facility, children do not find स्कूल गोइंग अ जॉयफुल एक्टिविटी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही तरीके से नहीं होगा तो लर्निंग जॉयफुल नहीं होगा, आनंद से लर्निंग नहीं ले सकेंगे। ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूशन अ पुअर स्कूल्स एनवायरमेंट, तो यहाँ पर पुअर स्कूल्स एनवायरमेंट के लिए लर्निंग भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल पड़ जाती है, ठीक है। आई होप ऑल आर क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर लेसन अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।